Hello, good morning friends. Myself JATIN from Asapura School, Bhuj, and today we are going to continue chapter number 5, arithmetic progression. Previous time we performed and explained the exercise 5.3 question number 1 and 2. So today's time is now to explain and calculate question number 3 from the exercise 5.3. So let's start with me. Question number 3 is, in an abyss, first of all, a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50 and find n and sn. कहने का मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म a is equal to 5 अवेलेबल है, कॉमन डिफरेंस d is equal to 3 अवेलेबल है, यहाँ पर an जो लास्ट टर्म है which shows 50, an is also equal to l is equal to 50 is called the last term, and we can find n and sn. So here a is equal to 5, d is equal to 3, an means l is equal to 50. Now we know that nth term formula is an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is called the first term, d is called the common difference, and an is called the last term here. So substitute the value in the formula. An is equal to 50 equal to a is equal to 5 plus n minus 1 into d is equal to 3, and we get 50 is equal to 5 plus n minus 1 into 3. Now 5 is transposing to the left hand side, and we get 50 minus 5 equal to n minus 1 into 3. 50 minus 5 is equal to 45, and therefore we get simplified form 45 is equal to n minus 1 into 3. Now both the sides divided by 3, and we get n minus 1 is equal to 45 by 3 equal to 3 15s are 45. So n minus 1 is equal to 15. Now 1 is transposing to the right hand side, and we get n is equal to 15 plus 1, n is equal to 16. So here the number of terms is 16 from given AP. Now find the Sn. Sn is equal to n by 2 into bracket a plus n. Here a is called the first term, l is called the last term, and n is the number of terms. So put the value in the formula, and we get S16 is equal to 16 by 2 into bracket 5 plus 50. 5 plus 50 is equal to 55, and 2 8s are 16, so cut down the factors, and finally we get S16 is equal to 8 multiplied by 55, and finally 55 8s are 440, so S16 is equal to 440. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म a दी गई थी, कॉमन डिफरेंस d हमारे पास था, और लास्ट टर्म an हमारे पास थी, जिसको चलते हुए यहाँ पर दो पार्ट में हमने सम कंप्लीट किया. सबसे पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किए, जो nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d का यूज करते हुए, और इसके बाद हमने सम ऑफ द n टर्म्स फाइंड आउट किया, मतलब कि sn फाइंड किया n by 2 into bracket a plus l फॉर्मूला का यूज करते हुए, जो डिफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए यूजफुल है. नाउ गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन. a is equal to 7 here, a 13 is equal to 35, d is unknown, and s13 we can also find here. कहने का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट टर्म a हमें दी है, लास्ट टर्म है a13 जिसे हम कंसिडर करेंगे l, ये है 35, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और सम ऑफ द 13 टर्म्स मतलब s13 फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हियर a is equal to 7, a13 is equal to l is equal to 35. Now put the value in the formula, nth term formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. Here an is equal to last term 35, a is the first term 7, n minus 1, that means 13 minus 1, here number of terms is equal to 13. So 13 minus 1 into d. Now 7 is transposing to the left hand side, and we get 35 minus 7 is equal to 13 minus 1, 12 into d. 35 minus 7 is equal to 28, so therefore we get 12d is equal to 28. Now divided 12 by both the sides, and finally we get d is equal to 28 by 12. Here 4 3s are 12 and 4 7s are 28. So finally we get d is equal to 7 by 3. 4 is the common factor which is cancelled out here. So we find the common difference, d is equal to 7 by 3. Now
we're going to find out S13. S13 is equal to n by 2 into a plus n. N is equal to 13, a is equal to 7 first term, and n is equal to 35, which is the last term. So now sum of the bracket 35 plus 7 is equal to 48, and then 13 divided by 2 multiplied by 42. We know that 21 2s are 42, so therefore we cut out and get S13 is equal to 21 multiplied by 13, and finally product of the two numbers 21 and 13 we get 273. So therefore S13 is equal to 273. One more example. Here A is equal to 12, A12 is equal to 37, D is equal to 3 are givens, and we find out first term A and S12 also. So very first step, सबसे पहले हमें A फाइंड आउट करना है, मतलब कि फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। इसके लिए nth टर्म फॉर्मूला का यूज हुआ है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू है a12 के लिए 37, a हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 12 कंसिडर हुई है, सो 12 माइनस 1 और डिफरेंस है 3। सो 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 minus 1 is equal to 11 multiplied by 3. So 37 is equal to a plus 33. Now 33 is transposing to the left hand side, and we get a is equal to 37 minus 33 equal to 4. So a is equal to 4 is our required first terms. Now we can find S12 by using the formula Sn is equal to n by 2 into bracket a plus n. Substitute the values. N is equal to 12, first term A is equal to 4, and last term N is equal to 37. So substitute the value in the formula. We get S12 is equal to 12 by 2 into bracket 4 plus 37. 4 plus 37 is equal to 41. 2 6 are 12. And then finally we get 6 multiplied by 41 is equal to 246. So S12 is equal to 246. Now one more example, example number 6, question number 3 from the exercise 5.3. Here A first term is equal to 2, difference D is equal to 8, Sn is equal to 90, मतलब के sum of the n terms is equal to 90, हमें find out करना है n और इसके बाद find out करना है A5. ओके, सबसे पहले हम find out करने जा रहे हैं number of terms n, और इसके लिए यहाँ पर हमें Sn दिया गया है. Sn is given 90. So we can apply the formula of Sn, means sum of the n terms for infinite arithmetic progression के लिए जो यूज होता है इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला इस तरह से Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into b. Now substitute the value. Sn is equal to 90, n unknown है हमारे लिए, so n by 2, a की वैल्यू है 2, सो इसे अवेलेबल करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस n माइनस 1 एंड d कॉमन डिफरेंस इज 8. नाउ सिंप्लीफाई दिस. हियर n by 2 is the denominator. Now it turns to the left hand side and multiply with the 90. So 90 multiplied by 2 equal to n into the bracket. Now 2 2s are 4 plus open the bracket with multiply 8. So 8 into n is equal to 8, and plus minus minus 8 ones are 8. So we get 90 multiplied 2 equal to n into bracket 4 plus 8n minus 8. 4 minus 8 is equal to minus 4, and then now we get 92 are 180 is equal to n into bracket 8n minus 4. Now open the bracket and simplify the terms. So finally we get 8n square minus 4n minus 180 is equal to 0. 8n square minus 4n minus 180 is equal to 0. This is the quadratic polynomial. So factorize this. 4 is the common first of all. So we get 4 is the common into the bracket 2n square minus n minus 45 is equal to 0. Now by using the splitting method of splitting of the midterm and factorize this, we get two factors n minus 5 and 2n plus 9 equal to 0. Now compare with 0.
n minus 5 is equal to 0, that means n is equal to 5, or 2n plus 9 is equal to 0, that means n is equal to minus 9 by 2, which is not required because this is the negative answer and which is not required in this case. So we consider n is equal to 5 is our number of terms. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है वो 5 कंसिडर हुई है. अब हमें an फाइंड आउट करना है n इज इक्वल टू 5 को लेकर. सो a5 फाइंड आउट करने के लिए फिर से एक बार यूज होगा nth टर्म फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू n इज इक्वल टू 5. फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8. सो वी गेट a5 is equal to 2 plus 5 minus 1 into d. Simplify the next step. 2 plus 4 into 8. 4 8s are 32 plus 2 is equal to 34. So final answer is a5 is equal to 34. Dear students, I hope so you understand very well and also calculate the sum with me. इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 3 के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस है. यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चंस एज ए सैम्पलिंग किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, किस मेथड का, किस फॉर्मूला का यूज़ करना है, इसे लेते हुए 4 वेरिएशन क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए कैलकुलेट करके. अब आपकी बारी है, आपको होमवर्क में बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसे कंप्लीट करना है और टेक्सचुअल एग्जांपल में ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं इसे आप कंपेयर करके इसे फाइंड आउट करके आपको कंप्लीट करना है. तो आज के इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड वीडियो में हमने 4 सम आपके सामने रखे. बाकी के जो रिमेनिंग सम्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे आज के नेक्स्ट वीडियो में. इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय.